is watching my screen. Okay. So today our task is to understand the reactor modeling in HYSYS. Then we will go our regular task. First of all, we have to see this lecture. Let me the screen. Okay. Basically, in HYSYS, we have three kinds of reactor. Uh, one is uh, one is a category which is called general reactors type. In this category, you will find 4 or 5 reactors. Then in second category, only one reactor is there, which is called continuous static reactor or CSTR. And one another category which is containing only one reactor, which is called plug flow reactor. Means in these categories, there are so many 4 or 5 reactors in general category, whereas CSTR and plug flow reactor are a special kind of reactor separately modeled in SPNIC's toolbox. Okay, now what is the meaning of react? Now there are two things in SPNIC's regarding reactors or reaction engineering. One one is the reactor and other is a reaction. These two are different things. Now it says that what is a reactor? With the exception of plug flow reactor, it says that only in a plug flow reactor you will find some different kind of options. All of the reactor operations share the same basic property view. बाकी सब में सेम है, बाकी सिर्फ प्लग फ्लो में आपके थोड़ा चेंजिंग है. The primary difference are the functions of the reaction types associated with each reactor. Now, the basic difference of each reactor is which type of reactions it can carry. There are several kinds of reactions as well, like conversion reaction, kinetic reaction, equilibrium reaction type, heterogeneous catalytic, simple reaction. So you will find different reactions type and you will find different reactors type. Reactors can be associated or linked with different kind of reactions. Now, this slide actually tells us that what type of reactions are there and what are their basic requirements. Now, very simple type of reactions is conversion reaction. Now, conversion reaction requires the stoichiometry. When some text is saying that any reaction requires stoichiometry, what it means you must have a balanced chemical reaction in hand, uh, 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 in which you have the information of reactants and products and their proper stoichiometric coefficients. So conversion reaction requires a stoichiometry, means we must have a reaction of all the reactions and the conversion of a base component in the reaction. So you need to have a conversion rate. For example, you must know that how much conversion of any reaction is there, 100% or 90%. So you must have this information. Second kind is equilibrium reaction. This requires also stoichiometry, means balance reaction must be with us. And then the term log K, kind of rate constant, means the kinetics information must be available. Or regarding the equilibrium reaction, means equilibrium constants it must be available. May be calculated using one of the several different methods as explained later. The reaction order of each component is determined from the stoichiometric coefficients. So you need to put stoichiometry and log K information in the panel, and then the rest of the things will be calculated by HYSYS. Similarly, heterogeneous kinetics require the kinetic terms of kinetic reaction as well as the activation energy, frequency vector, and component exponent terms at absorption kinetics etc. Kinetic, simple rate. So you have to understand that these are different kind of reactions. When you go from top to down, actually you are increasing the complications of the reaction definition. These are the reactions definition. These reactions, once defined, then they can be attained with any type of reactor. So now, in general category, the 4 reactors of share common property view.
Now this is a old presentation. Now you will find a few more like yield reactor is also there. So CSTR, Gibbs reactor, equilibrium reactor, and conversion reactor and yield reactor nowadays. These 4 5 reactors share same common property. Means any react among from these, if you place any reactor in the PFD menu, then you will find similar kind of panel or property window, and you have to define the appropriate parameters. The last area are different and general. These three reactors are general reactors, whether CSTR is a second another category. Now, what is a reactor? Conversion reactor. Now, this is also a reactor. Now, conversion reaction and conversion reactor. These are two separate things. Conversion reaction is this one, which is defined by this. This is a reaction type. Now, conversion reactor is what? It says the conversion reactor is a vessel in which conversion reactions are performed. So, this is a vessel basically in which you can attach only conversion reaction. You can only attach reaction set that contains conversion reactions. Each reaction in the set proceeds until the specific conversion is attained or until a limiting reactor. So reaction extent is up till the conversion of the base component which you define, for example, 90%. Or if there is another reactant which is a limiting reactant, so there is a termination of the reaction. Similarly, equilibrium reactor, what it does, the equilibrium reactor is a vessel which models equilibrium reactions. So equilibrium reactions would be attached or could be attached only with the equilibrium reactor. The outlet streams of the reactor are in state of the chemical and physical equilibrium. This is its sole property, which is not available in the previous reactor. The conversion, the equilibrium constant, and the extent are all calculated based on the equilibrium reaction. So you don't need to put conversion, but it is being calculated by the reactor itself, and the outlet streams are in equilibrium. Similarly, the Gibbs reactor calculates the exiting composition such that the phase and chemical equilibria of the outlet streams are attained. However, the Gibbs reactor does not need to make use of specified reaction stoichiometry to compute the outlet stream composition. Now, this is a very interesting reactor. Only this reactor is the reactor or reaction type in which you do not need any definition of reaction. For example, if you have a number of species in a stream, for example, methane, ethane, ethylene, carbon dioxide, this and that. Now you may have some approach or some literature says that these two chemicals could react at this temperature and pressure and produce this type of amount. So you can check whether this is possible from the Gibbs free energy phenomena or not. So you do not need stoichiometry. You just put this reactor, and it will tell us that what are the possible outcomes of any group of streams. The condition that gives free energy of the reactor system is at a minimum at equilibrium is used to calculate that. This is the mechanism how it calculates the output compositions. Then CSTR, continuous state tank reactor. This CSTR is a vessel in which kinetic, heterogeneous, catalytic, and simple rate reactions can be performed. The conversion in the reactor depends on the rate expression of the reaction associated with the reaction type. Now you need to define the proper kinetics. In kinetics, you need to define the rate expressions or rate parameters like Arrhenius factors like activation energy and Arrhenius constant. The inlet stream is assumed to be perfectly and instantaneously mixed with the material already in the reactor so that the outlet stream composition is identical to that of reactor constant. So when you say CSTR, it means this, the red colored text, that the inlet stream is assumed to be perfectly mixed with the mass which is available in the reactor. Given the reactor volume, a consistent rate expression for each reaction and reaction stoichiometry, the CSTR compute the conversion of each component entering the reactor. So you need to define these three things for the reactor, and the response, the CSTR will compute the composition of the products. And one another kind of reactor which is separately available, which is plug flow reactor.
The plug flow reactor or tubular reactor generally consists of bank of cylindrical pipes or tubes. Basically, this reactor looks like a pipe, but mathematically, this is divided into several small cylinders, which we call del TZ. The flow field is modeled as a plug flow, implying that the stream is radially isotropic without mass or energy gradients. When you say plug flow, it means there is no any gradient radially. Only gradients of anything is in axial direction. This also implies that axial mixing is negligible. As the reactants flow the length of the reactor, they are continuously consumed. Hence, there is an axial variation in the concentration. Since reaction rate is function of concentration, the reaction rate also varies axially, except zero order reaction. So you can see in CSTR, there is no any change of concentration at any point, but in a plug flow reactor, there is a different compositions throughout the reactor. Okay. So now this is a basic introduction. Now let me uh, give some direct deliberations of the these reactors. We have to understand some basic concept about the kinetics during my lecture. Remember, I have done a PhD in chemical engineering kinetics. I am the only person in my department who has done PhD in kinetics. काइनेटिक्स में कोई भी हाथ नहीं डालता बहुत लोग ये समझते हैं कि काइनेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम जो है ना वो नहीं कर पाते but really it is very beautiful subject, and if you have a good command on mathematics, particularly derivatives and integrations, then this subject play a vital role in chemical engineering. Anyway, let me first chalk out some problem. This problem also I have seen. This is your, I think, or this is your last problem actually, tutorial wise. But I will not first open the tutorial. I'm just giving you a basic concept regarding how reactions and reaction sets. What are the reaction definitions, the reaction set definitions, and ranking. So for this, I am creating one problem that, for example, we have a methane and methane combustion reaction, and it is uh, almost this type of reaction uh, will be seen, but this is not balanced. So we have to balance the reaction. Um, so we have two here, I think, and two here. So 2 and 2, 4 oxygen, 2 to 4, and 4 hydrogen. Okay. Now this is a methane combustion reaction, and it is completely defined, and it is now balanced chemical reaction. So when you say stoichiometry, information of stoichiometry means information of this reaction. अगर आपके पास ये रिएक्शन नहीं होगा इस तरह का बैलेंस, तो आप बहुत सारे रिएक्शंस नहीं डिफाइन कर पाएंगे. Okay, so going to demonstrate the development of combustion reaction for methane, we have to first insert these species: methane, oxygen, carbon dioxide, and water. So we are starting our new case. Okay, so methane is our first component. Methane, oxygen, CO2, and water. Okay. And for the sake of simplicity, we take our usual fluid packet, which is Peng Robinson. Now, we have already seen these two tabs. Now, this is the first time we are entering the reaction tab. When we say reactions, so this tab is basically the definition of the reactions. You have to define your reactions from this tab, and then later these defined reactions can be applied in our simulations. So first of all, we click in the reaction. Sorry, in the reactions, when we click add, then you will notice that one set reaction set is basically developed, and under this set, you have to define multiple reactions. You can define only one reaction, or if you may have a different kind of reactions. Now, what is the phenomena of this set?
Actually, there is a possibility that you may have more than 2 or 3 reactors in your simulations. For example, you have 3 reactors in series, and they are in series, and 3 different reactors. Now, different kind of reactions are being performed. So instead of individually reactions incorporation, you have to actually incorporate the set. So you have to define different sets for all the reactors. But in our example, we have only one set, and in this one set, we have only one reaction, which is this reaction. So we have to aid reaction. Now, when we click on aid, you will notice that these type of reactions appear in front of you. You can now it is asking that whether you are interested to develop or design or define conversion reaction or equilibrium reaction or a heterogeneous scatter reaction or kinetic or separate. These are 5. And this is coming from HYSYS. Otherwise, spin properties, reactant source is HYSYS and spin properties. Now, there is a little story behind this box. Basically, HYSYS is not spin's uh, own software since its birth, but it is an alien for Aspen group. In Aspen, all the things are available in Aspen property package. But when they borrow HYSYS, then they kept HYSYS still separately. So they are asking that from where you want to keep. So this is okay for us. HYSYS is okay. Uh, you will not find any difference if you click even SPN properties. You cannot understand what is happening behind this scene, but this is only because of this software is alien. ISIS is not SPN's own software since its birth, but it borrowed later. Okay. So now here I am just interested here to define the conversion reaction. So I have selected, and by default it is selected conversion. If you shift your selection to other, you can also select others, but conversion and aid reaction. So you can you can define multiple reactions. If I define again another conversion reaction, so you will notice reaction 2 is also here. So up till what limit you can aid reactions. This is up to you. There is no any limitations, but definitely when you increase the reactions, the time of solution will little bit more. Okay. So because we do not need reaction 2 here, so we delete reaction 2 for the time being, and we stayed on reaction 1. Now this reaction 1 is created but not defined yet. So you double click on the reaction 1, or you click on the edit reaction 1, so you can reach at this point. Now this is the definition page of the reaction. Now, because it's a conversion reaction, you are watching only 2 panels. One is the stoichiometry information, and other is the uh, base component information, that how much conversion is there. We will discuss one by one. Now, first, stoichiometry definition. Now, first of all, stoichiometry definition means what species are involving a particular reaction. For example, it is possibility that in your component list you have 10 components, but this reaction contains only 4. So the appropriate species from the component list must be selected. But because we are modeling only this reaction, and we have selected only these 4 species, so we can see only these species when we making drop down. Okay, now now uh, after selection of all components on the stoichiometric coefficient, you have to put the stoichiometric coefficients of the reactant species. For example, reactant side methane. If there is no any reactant stoichiometric coefficient, it means it has a 1 mole of methane react with a 2 mole of oxygen. So 2 is the stoichiometric coefficient of oxygen, and 1, if there's no any number, it means 1 CO2 is produced and 2 moles of H2O are produced. So this 1, 2, 1, 2 are the stoichiometric coefficients of reactant and product. But here, reactants always in a product, always in a
negative numbers and reactant always in a positive number, positive numbers. So 1 for methane, 2 for oxygen, now -1 for CO2 and -2 for water. Sorry, reactant should be negative and product should be positive. Okay, so this is how. Now see, sometime I also missed this thing. Reactant always in negative and product always in positive. Now, if there is any error, then balance error will have some value, not zero. But here you can see it is zero. It means the reaction is now balanced. And how I can I got the understanding that whether reactant are minus and product minus. Now, in the base component, if you find the components which are reactant side, then you are right. But if you will find the product side component in the base component, it means you have done the negative sign, the wrong side. तो पहले मैंने जो है ना इसको 1 किया था, इसको मैंने 2 किया था और मैं इसको दोबारा करके दिखाता हूँ आपको कि मैंने कैसे जाना कि ये अब मैंने सही इंफॉर्मेशन, क्योंकि अक्सर मैं भी भूल जाता हूँ अगर हम ज्यादातर इसको यूज नहीं करते तो. ओके, नाउ सी, when I reverse the thing, then again balance is again zero. But now base component is from product sides, either CO2 or H2O. So this is wrong. Base component always from reactant side. So from this information, I got that no. This is reactant are always minus and product are in a positive. You have to keep this understanding very clear because this will create lots of problem in our calculations. Though the simulations will be performed, but you will not get your desired results. Okay, so this is how we can enter the stoichiometry. Reactants stoichiometric coefficient minus and product stoichiometric coefficient positive. Okay. Now come to the here. Okay, there's another interesting thing. If you don't know that what are the exact coefficient, for example, if you have a reaction and you don't know, you just put 1 and minus whatsoever number you put, and then you click on the balance. HYSYS will automatically balance with the appropriate numbers. So this is a very interesting feature of the balancing out. Okay. On the right side, base component. Now, from methane and oxygen, we know that methane is our important thing. So methane is our base component. Reaction phase overall, you can change the appropriate phase. Overall means we are not very much concerned with the phase here. Whatsoever the phase may be, the reaction is seen in an overall picture. Now here, this is very interesting that it says formula says that conversion is being calculated whatsoever you have put to the CO or C naught value plus C1 times temperature plus C2 times temperature square. It means this is a quadratic equation of temperature or temperature dependent quantity. If you say that this reaction is initially the methane is converted only 10 to 20% by default, and then rest of the conversion is dependent on the temperature. Definitely, this is a exothermic reaction. So if it is 20% of methane is burned, then temperature raised, and if you want to make it a temperature dependent, then you put some C1 and C2. Now this comes from literature, but if you don't put any value C1 and C2, it means they are zero. So when zero multiplied by anything is zero. So if we are not interested to make it a temperature dependent quantity, so we do not put any value in these two coefficients, and we can say that okay, 100% conversion is there. When methane react with oxygen, when methane and oxygen comes closer to each other, then they must be reacted. And if availability of oxygen is enough, then methane is 100% converted. So this is our definition. You can put 90%, so you will see 90% conversion is there, and then stoppage. यहाँ पर मैंने मीथेन को कहा है कि 100% नहीं हो जाए. इसको मैंने टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं किया. अगर मैं कोई भी क्वांटिटी यहाँ रखूंगा तो फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा. इस वक्त C1 और C2 की जीरो बाय डिफॉल्ट जीरो है, और वो जीरो कोई भी टेम्परेचर मल्टीप्लाई होकर जीरो ही बनेगा.
So this is how, when you say ready, it means now completely this reaction is completely defined. I'm closing this, and you will find that configure is okay. Now we have another one last thing, because still you are watching some text that it is not appropriately defined yet. Now what is the last remaining thing is that whatsoever you have defined, you have to aid with your fluid package. It says that not attached to fluid package. So you just click on add fluid package, because we only use one basis fluid package, Peng Robinson. Sometime in different or advanced simulations, you will find more than one fluid package packages are being used, and then you will find different bases, basis one, basis two, and basis three. So up till now, we have no any this issue. So we just by default it is only one option. So just we need to add fluid package. Now ready. This is ready set, and under this set we have only one reaction, which is this one. So this is how we can define reaction. Now, this reaction set or these type of reactions are now utilized. This is only definition reaction. We go in our simulation environment. Now you can see, if I say click on reactor, now you will see that lots of reactors are coming in with the version 11. Primarily, there are three reactors in terms of category wise. One is this CSTR reactor. I am putting this for your understanding. This is a plug flow reactor. And now the rest of the reactors are almost share the similar kind of thing. Like this is our conversion reactor. This is our equilibrium reactor. This is our Gibbs reactor, and this is our yield reactor, yield shift reactor, and some other advanced things, even never utilized by myself. So when versions enhance, you will find some new options, but these are the basic things. Now remember, these one, two, three, four, these are almost have a similar kind of properties. Only the reaction types are different, which can be attached. This is another phenomena, or this is another kind of reactor, and this is another kind of reactor. So basically, these are the vessels. All are the vessels or pipe, and they require some reactions and some streams. And when streams or materials are passing from these reactors, the conversion is being done as per the definition of the reaction. So here I'm just deleting all the things, and I'm only interested in conversion reactor, because my definition of the reaction is of conversion type. Okay, so I am creating two streams. I can create also one stream, but instead of one stream, I create two streams separately. One stream I call it fuel stream, and it is at ambient temperature and almost ambient pressure, and it has some mass, and this is 100% methane. So fuel, so methane is 100% in this. Okay, and another is oxygen. You can also create the air, but here I am giving the pure oxygen. It is also at ambient temperature, ambient pressure, and some rate, and it is 100% composition is oxygen. Okay, two reaction now. Or double click on the reaction reactor. Now this panel is similar for CSTR and all the four types of similar cylindrical type shapes. The plug flow reactor has different in nature. Okay, so what it says in design tab? First of all, you have to complete their connections. Inlets, you can insert multiple streams. So I am inserting two streams, fuel and oxygen. There are optional two streams. One is a vapor in the vapor form, and other is there could be options of the production of liquid products. So liquid out.
optional energy streams there. If you have some coil or some steam jackets or steam coiling, it means you are inserting a stream, heat stream, or even you have a cooling, so you can take out the stream. So if you define some stream against this optional energy stream, it means you must inform, yeah, or you must give some information about the energy in terms of kilojoule or watt. But here we are not giving any energy streams. But still, you are watching. This is the first time happening that all these streams information are there, but this red color bar is not converted into yellow. Usually, in other operations, all the when you define all the inlet and outlets, then this red bar becomes yellow bar. Then you have to define the parameters. Now it says that required a reaction set. For reactors, you must have a reaction set. So you go in a reaction tab. In the reaction tab, it says that reaction set. When you drop down, because you have defined only one set, if you define multiple sets, then you will find here all the numbers, but because we have defined only one, so one set. Only when you just click on this, each and everything is calculated by itself, and eventually they give us some sort of information. For example, in the reactions results, we have only one reaction, so its actual conversion percentage was 50, and the base component was methane. Now, what happens? So, first of all, we analyze what had happened. In the output, you can see that uh, 0.25 mmCFD molar flow is coming out from vapor out, but zero flow is coming from liquid. It means these two things are in a gaseous phase, and when they combust, then whole product is also in a gaseous phase, no any liquid. So it means whatsoever the product is in a vapor stream. Now we double click this vapor stream and we go composition. We see uh, methane is still there, 24.9%. Though we gave 100% conversion, but still methane is hooked up and we got CO2 and H2O. Why this happened? Anyone? Why methane is still there? What is the reason? I think oxygen is limiting reactant. Oxygen is limiting reactant. The oxygen is finished. So, so this reaction extent was up till this point, and then rest of the methane was coming out as unreactant. Second thing is you can see we have inserted at ambient temperature 25 degrees centigrade, but this stream is at 2391 degrees centigrade. Huge temperature increase because of the exothermic reaction nature. So this is how we can define our reactions, and we can use our reactions. You can see now if we would like to define another reactor, which is a Gibbs reactor. Now this is a Gibbs reactor. Okay, for the time being, I am breaking this streams, and now this is a Gibbs reactor, and I am also breaking this connections. Okay. Now I am doing almost same thing with this. There's a fuel and oxygen. The vapor out is vapor out and liquid out because we have created this. Now you see in a reaction, it has not required anything from us. Only one option is by default is take Gibbs reactions only. So we have not given any type of reaction sets, but it says it calculated the things automatically. Now see what it has calculated. Almost you will find almost similar kind of methane percentages and other rest of the things. Even you can find
the similar compositions, similar temperatures, 23 or 91. So it means this Gibbs reactor actually calculates the incoming streams or species. Thermodynamically, it calculates the Gibbs energy, and on the basis of Gibbs energy, it calculates that how much amount of CO2 or other things could be there. So this is how Gibbs reactor works. Gibbs reactor works. Gibbs reactor is actually a black box modeling. Black box modeling, there are three kinds of modeling. One is a white box modeling, gray box modeling, and black box modeling. White box modeling means we know each and everything and we model. Gray box modeling, we know little and rest of the thing calculated by the software. Black box modeling like ANN, artificial neural network, or this type kind of thing, we have no any information, but it calculates on the basis of some assumptions and some basic things like neural network. So this is very important reactor, and can try. You can try, and uh, so I think there is some person. Okay, Fahad Khan is admitting. So this is how we can simulate. Now I am going back on the definition panel. Up till this, very simple things are there. Now I am interested to shift. I am adding one another reactor reaction, which is equilibrium reaction. For example, if I am adding this, okay. Now it says that you have a defined reaction set in some reactor. So I have deleted this in which I have the reaction set is defined. Okay. And I am just this detach from fluid package. Okay, so I am adding one another kind of okay. ये तो लग गया चले चले I am adding one another set new set. Okay, here I am interested to define one reaction set, and it is said that now see when I have a different kind of reaction in a conversion reaction you have only stoichiometry and you have a basis. But when we have an equilibrium reactor, so you have a stoichiometry, similar kind of thing you have to provide here. You have a basis, activity, and phase. Now you have to define the K equilibrium, either any way, either you have to define log K by this thing, or Gibbs free energy, or fixed K, you have a value, or K versus type table, you may have a table of this, and you have also defined approach, and you can pick something from library. uh, it has seen that you have these type of species, so it says that in library these kind of reactions are defined. So when you change the reaction type, more information needs to be given, and then that particular reaction can be utilized in particular type of reactor. If I am adding kinetic reactor. So I'm just showing you that in kinetic reactor, you have to define the component, stoichiometric coefficient, forward order, reverse order. On the right side, you have to define the forward reaction rate as well as the reverse reaction rate. If you do not have any reversible reaction, so you do not define the reverse reaction rate, it means reverse reaction rate is zero. So, and on the basis of these rate exponent or rate parameters, rate of reaction is calculated on the basis of this thing, that forward reaction minus backward reaction. So, this getting some problem, I think. Okay. So, from this understanding, uh, you can say that when you have a different kind of reaction,
you have to provide more and more information. It is a heterogeneous reaction. You have to define the stoichiometry, base component, and reaction rate of forward and backward. And this is a grain modeling is basically applied here. And one scientist name is Hemesher. What you can see in a kinetic help here. Uh, So this is it's a mathematical understanding that how rate is being calculated. If you define this, actually this is the rate of catalyst as well. You have to input the rate of catalyst via these equations. So different reactions have different purposes, and on the basis of those purposes, you have to apply different reactors in simulation. Okay, now I'm pretty sure that you have at least some understanding about the reactors from this demonstration. The one last work which I have to only show you that when you place a plug flow reactor and when you see their menu or a property window, so you will find its view is a little bit different as compared to the previous 4 or 5 reactors. Again, you have inlets, multiple inlets can be inserted from this side, and you have only one outlet stream. And in the parameters, you can see say either a delta P or duty if you have defined some energy streams. And the reaction, again, reaction set, any set you have already defined in the reaction panel, you can call this. Now here, number of segments 20. It means this pipe is basically divided into 20 segments. You can increase or decrease. Now this information, sorry, this information is for the integration or for the solvers mathematical calculations. If you increase the number, then you can have a more better results, but definitely it affect on the computation time, minimum step fraction. So uh, uh, it is preferable that do not disturb until you have good results, or you are not getting the appropriate results. Then you can change these values. Then rating, total volume, number of tubes, only one tube, or there are so many tubes, wall thickness, and then how much length is there, and what is the diameter. These are the dimensional parameters. Otherwise, you cannot get the results. And then you can see the performance, reaction rates, transport coefficients, and the composition of all the substances. Now, if you have any question, then you can ask. Otherwise, we can just move to the tutorial, and we see that what they are saying, and if each and everything is clear, then we can discuss. Otherwise, we can leave the things here. Yes. Now I'm going in the task. We have what we have done here is the last combustion tutorial. This tutorial I haven't seen, but I know only methane combustion is defined in this tutorial. Similar reaction you can see methane is combustion reaction is defined, and it created some problem definition that determined how much energy is available from 5 feet cube per hour of fuel stream that consists of only methane at 60 psi. Uh, this is the kind of problem that sometime your boss can say that in industry that okay, we have this much gas, so how much energy we can get. So this is a rating problem. The air feed should be approximately 80 to 20% in excess uh, percent of oxygen. There should be 10% excess oxygen of your TK. Assume the exhaust is 180, and now it says some sort of outlet informations as well. So similarly, you can see it has calculated almost similar. We have 100% here.
And we have a stage, we have a methane stream, we have a oxygen stream. Okay, air instead of oxygen, they have used air, and then they also involve some valve because of maintaining the pressures. Okay, so and it says reactor is conversion reactor, and they apply the reaction set in this. Almost a similar kind of flow sheet is there. Instead of direct methane entry, they have given the valve because they need to do something with this valve to control the things. Okay, so because sometimes the tutorial is also helpful for the upcoming tutorial. So maybe in the dynamics you will see again similar kind of problem, and instead of this valve, this could be the control valve, which could control the things. Okay. So now it says after doing this, it says that 5 cubic feet meter methane, if it is combusted with a 10% of air, 6.5 kilowatt of heat is being generated in this particular type of example. So you can try this tutorial. At least you understand the panels of reaction definition and attainment with the fluid package, or you can see other tutorials are very much complicated and very much informative as well. Like this is cross-esterification reactions and polymer reaction and this and that. For example, this is a isomerization and a CSTR with S-pen 11. So it says isomerization CIS2 butene is converted to trans 2. So what is the difference? Difference is that uh, ethane, methyl group. Okay, only bond shifting of the methyl group is there. Methyl is going upside. Structural differences are there. So this is a first order kinetics और reaction rate भी हमें बता रहा है कि इतना है और फिर उसके बाद जो है ना it says that now this tutorial is giving us a little bit uh, mathematical understanding. ये हमने subjects में अपने में पढ़ा था कि how we actually do the reaction engineering problems, numerics. So this is component A, mole balance, mole going inside, mole reacted, and mole taken out. So this is anything which is not going in and out balanced is basically the rate of that thing increase in the system. So this is nothing but the rate of mole increased per unit time within the volume of the reactor are equal this, and वो कहता है कि अगर ये steady state में होगा तो ये equal to zero होगा. Means this derivative has nothing to do. Eventually, ये हमारे ट्यूटोरियल का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन वो कह रहा है कि एनालिटिकल सॉल्यूशन से भी आप करके देखें तो आपका एक रेजिडेंस टाइम आ रहा है जो कि इसका मुद्दा होगा सवाल का. इस सवाल इसके प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने नहीं पढ़ा, एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज फ्रॉम बैकग्राउंड. 2-butene is a 4-carbon alkene that exists as two geometric isotherms. Okay. And this, the irreversible liquid phase isomerization reaction with first order reaction kinetics is shown below. It is desired to determine the residence time required to reach 90%. 90% तक के लिए कितना हम इस CSTR में इसको रखें तो ये 90% तक होगा. तो जवाब इनका आया है तकरीबन 39 मिनट तक ये रखेंगे तो हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग. ये हमने सब्जेक्ट्स में पढ़ाते हैं फ्रॉम CSTR इक्वेशंस, मॉडल इक्वेशंस. ओके. फिर हाइसिस को यूज किया गया है. अगेन CIS 2 ब्यूटीन और ट्रांस 2 ब्यूटीन लिए गए हैं और NRTL पैकेज लिया गया है एंड काइनेटिक रेट लिया गया है और उसके बाद उसमें ये इंफॉर्मेशन इंसर्ट की गई है. ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी? ये इंफॉर्मेशन जो है ना वो आपके लिटरेचर से आई है. कहीं पर इन्होंने या तो रेफरेंस भी दिया होगा या तो उन्होंने कहा होगा कि हम अपने हिसाब से एक हाइपोथेटिकल डेटा डाल रहे हैं, बट इफ यू वांट टू गो विद द लिटरेचर देन यू
you can even you can simulate this, and you can publish the research paper by quoting some references and then by doing some novel act with the model. So if anyone is interested, then these things can be converted into a good publications as well. So this reaction actually it define the reaction, and it give the appropriate kinetic rate by defining only activation, only Arrhenius constant rather than activation energy and P. Okay, so after doing this, it says reactors, and CSTR reactor is being added, and in CSTR, uh, on usual feeds and liquid product and this and that. And after defining when it says this reaction rate set is there, it asks you about the volume, because you must have the geometric information. Specify the feed stream, and must have this and parameters में you can see कि ये चीज हो गई. अब एडजस्ट करेगा कि इसकी एक्चुअल परसेंटेज को 90 तक महदूद रखो, तो फिर ये जो है ना वो आपका जितना भी टाइम लगा उतना आपको ये टाइम कैलकुलेट करके बताएगा. और ये टाइम के लिए अगेन इट कैलकुलेट्स द रिएक्टर वॉल्यूम और फ्लो रेट्स को डिवाइड करेगा, तो इवेंचुअली वी हैव अ टाइम. देखें, एक चीज है वॉल्यूम और एक चीज है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट. तो वॉल्यूम को वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट से डिवाइड करने से वॉल्यूम वॉल्यूम कट जाएगा एंड आवर ऊपर आ जाएगा. सो इवेंचुअली इट सेज 39.13 मिनट. सो सी के कैलकुलेशन से अगर उसकी कैलकुलेशंस को देखा जाए 39.13 मिनट आ रहा है, और अगर हाइसिस से ये सारा इसने सॉल्व किया है तो जवाब 39.13 मिनट. इतना परफेक्ट आंसर आया है. सो बोथ द एनालिटिकल सर्जन एंड डिजाइन have almost same time resolution time calculation. जी, क्या ख्याल है फहद मियाँ, आप लेट आए हो, क्या ख्याल है, इसको ट्राई करते हैं आप लोग या? तो ट्राई करना चाहिए ट्राई करना चाहिए मैंने, मुझे या आपको? क्वेश्चन ये है सर, असल. हम लोगों को। आपको आपको हाँ, वो सर काशिफ साहब जो है ना वो कह रहे हैं कि आपको आपको ये हमें ट्राई करने के लिए ना तो कुछ 2-4 महीने चाहिए होंगे. चले, मैं जल्दी में कोशिश करूंगा कि ये ट्यूटोरियल जो है ना वो हम बना पाए. हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन तो मौजूद है. मैं पहले तो इसको जो है ना वो क्लोज केस करूंगा, जो भी इसकी खराफात हैं वो खत्म हो जाएं, और हम इस हफ्ते बिल्कुल. तो मैं हाइसस के साथ ही वो लड़ता रहा हूँ सॉफ्टवेयर में हाँ सेटिंग करते हुए, क्योंकि वो बहुत सी बार मैंने वो डिस्टिलेशन की प्रॉब्लम सॉल्व की. हाँ, अब एक बार वही सेम डेटा पे वो कन्वर्ज हो गई, दूसरी बार फिर दोबारा उसी को रिपीट कर रहा हूँ, वो अनकन्वर्ज रह रहा है. ये तुम उसको डिलीट नहीं कर रहे हो ना, उन सबको डिलीट करके दोबारा करो. हाँ, टी वो आई पूरा एस टू जीरो से लेकर फिर दोबारा बंद करके सारा कुछ पीसी भी रीस्टार्ट करके सब कुछ वो किया. मैंने कहा यार पता नहीं इस बार क्या प्रॉब्लम आई हुई है. तो हाँ, ये तो देख फिर भी नहीं देख हुआ. वो. हाँ, फिर भी कन्वर्ज नहीं हुआ. हाँ कन्वर्ज नहीं हुआ. इसका मतलब ये है कि वो पीछे कुछ ना कुछ मेमोरी उसकी रहती है कि ये ना कोई हाँ बिल्कुल चलें, है. ये मुझे बताएं कि फार्मूला है C4H8. नहीं तो सेलेक्ट. इमरान साहब, जी जी. ये बताइए कि हमें पता कैसे चलेगा कि इसमें गिब्स रिएक्टर हम यूज करना है, इसमें कन्वर्जन रिएक्टर यूज करना है, इसमें पीएफआर, इसमें सीएसटीआर यूज करना है. हाँ, ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है. ये असल में आपको एक सब्जेक्ट है हमारा केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग. वो अगर आपने सही पढ़ा हो या अगर आप दोबारा पढ़ें तो उसमें आपकी हाँ सारी ये एप्लीकेशन बता रहा है. लेकिन 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 सबसे पहले आप ये देखें कि हमने पहला पहला जो रिएक्शन बनाया जो सिंपल था वो था कन्वर्जन रिएक्शन. कन्वर्जन रिएक्शन में काइनेटिक्स की कोई बात नहीं हो रही थी. ठीक है, काइनेटिक्स की कोई बात नहीं हो रही थी, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो जो रिएक्शन था मीथेन वाला
वो कितने टाइम में हुआ, आप ये बात नहीं कह सकते। आप ये सिर्फ कह सकते हैं कि कितनी मीथेन और कितनी ऑक्सीजन जब आई तो उस वो कितना कन्वर्ज हुआ और उसका कितना जो है ना वो हीट निकली, कितना टेम्परेचर आया, कितना प्रेशर आया, ये तो बातें आप देख देख रहे हैं। लेकिन आप टाइम का नहीं बता पा रहे। क्यों नहीं बता पा रहे? क्योंकि वो काइनेटिक डिपेंडेंट नहीं है। यूजुअली अगर हम रियलिस्टिक वर्ल्ड की बात करें, हम अगर रियलिस्टिक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स की बात करें, तो कन्वर्जन रिएक्टर जो है वो एक फेक रिएक्टर है। फेक का मतलब है कि वो सिर्फ हमें कन्वर्ट करके बताएगा। कभी कभी क्या होता है, जितना आप रिएक्शंस को सही तरीके से डिफाइन करेंगे उतना आपको रियलिस्टिक आंसर मिलेगा। अगर मैं ये सारी बात जो है ना वो अजम्पशंस पर डिपेंड कर रही है। अगर हमने कन्वर्जन रिएक्टर में अज्यूम ये किया कि मीथेन और ऑक्सीजन का 100% कांटेक्ट हो रहा है, ठीक है ना, और ये सही भी बात होती है ज्यादातर, क्योंकि मीथेन जो है वो एक गैस फॉर्म है। जब हम अपने स्टोव में मीथेन को स्टार्ट करते हैं, चूल्हे को स्टार्ट करते हैं और मैच बॉक्स से या लाइटर से जो है ना उसको शोला दिखाते हैं, तो सिर्फ कोई एक हिस्सा नहीं जलता, बल्कि जितना भी मीथेन वो निकल रही होती है वो सारी जल जाती है। क्योंकि मीथेन एक बहुत फास्ट रिएक्शन है, बहुत उसका नैनो स्केल में उसका टाइम जाता है। और मीथेन जहाँ भी होगी, एक दफा एक मॉलिक्यूल ने अगर आग पकड़ ली तो उस इलाके में जहां जहां मीथेन का मॉलिक्यूल होंगे वो जल जाएंगे और विद इन माइक्रो सेकंड्स में सारा काम हो रहा होगा। तो इस तरह के रिएक्शंस जिसको हम गैस फेज रिएक्शन यूजुअली कहते हैं, जिसकी काइनेटिक्स फास्ट होती है, हम इसको इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस कहते हैं, उनमें रेट का इतना दारोमदार होता भी नहीं है। लेकिन अक्सर रिएक्शन ऐसे नहीं होते जिनको कुछ ना कुछ वैसे मीथेन को भी कुछ ना कुछ टाइम चाहिए होता है, वो भले कितना भी नैनो सेकंड्स में हो। तो यूजुअली हमारा जो काइनेटिक का वाला जो पोर्शंस है ना, ये काइनेट जितने भी ऐसे रिएक्शंस जो काइनेटिक्स डिफाइन करते हो, मिसाल तौर ये जो रिएक्शंस हैं, ये हमारे अपार्ट फ्रॉम कन्वर्जन इक्विलिब्रियम से लेकर सिंपल रेट तक या काइनेटिक तक, ये सारे रिएक्शन फिर भी बेहतर हैं एज कम्पेयर टू कन्वर्जन रिएक्शन। लेकिन सवाल ये है कि फिर हम कन्वर्जन रिएक्शन कब यूज करते हैं? कन्वर्जन रिएक्शन तब यूज करेंगे जब हमारा मुद्दा टाइम का नहीं होगा। हमारा मुद्दा होगा, कोई हम सिमुलेशन बना रहे होंगे और उसमें कहेंगे कि ठीक है, ये दो स्ट्रीम्स हैं, इसके जो भी रिएक्टर है वो कन्वर्ज हो जाएं। बाद में हमें कुछ और काम करने हैं, उसमें हमने सिर्फ उसका मटेरियल बैलेंस, एनर्जी बैलेंस करना है, तो हम ये काम कन्वर्जन रिएक्शन से कर सकते हैं। मिसाल तौर आपको हमारे एक स्टूडेंट हैं, गर्ल स्टूडेंट हैं, वो एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं कि सिनगेज में जो सीओ, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होता है, इससे हम इथेनॉल मिथेनॉल बनाते हैं। तो अब उसकी काइनेटिक्स जो है ना वो लिटरेचर में नहीं है, या है भी तो बहुत रेयर है, या बहुत उसके मसले हैं। अब हम फंस गए कि हमने अगर कन्वर्जन रिएक्शन सिर्फ चलाएंगे तो फिर हमारा मुद्दा ये है कि अगर रिएक्टर बनेगा तो कितने टाइम में ये परफॉर्म होगी और फिर उसका रेजिडेंस टाइम क्या होगा, फिर उस हिसाब से उसकी हम सारी थीसिस में हम उसका जो है ना वो डिजाइनिंग देना चाहते हैं। तो हमने कहा कि यार गिब्स पहले लगा कर देखो कि बनता है या नहीं है इस टेम्परेचर प्रेशर पर। फिर हमें पता चला कि आम टेम्परेचर में वो रिएक्शन नहीं होता, -10 डिग्री सेंटीग्रेड से जब नीचे जाता है तब ये परफॉर्म होता है थर्मोडायनेमिकली। तो अपनी अपनी चॉइस है, आपको जितना रियलिस्टिक आंसर चाहिए आप उतना रियलिस्टिक चाहते हो। अब बात करते हैं काइनेटिक्स की। काइनेटिक्स एक सब्जेक्ट है बेसिकली, उसका नाम आप केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का रख लें या केमिकल इंजीनियरिंग काइनेटिक्स रख लें, बात एक ही है। उस सब्जेक्ट में हम रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। इन सब्जेक्ट्स में हम बेसिकली दो बातें पढ़ते हैं। एक तो किसी भी रिएक्शन का रेट मालूम करना, यानी कि काइनेटिक सब्जेक्ट में दो एस्पेक्ट होते हैं। एक होता है रेट ऑफ रिएक्शन मालूम करना, दूसरा होता है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन मालूम। रेट का मतलब होता है कि कितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है पर यूनिट टाइम, या कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बन रहा है पर यूनिट टाइम। ठीक है, ये तो हो गया सिंपल रेट। दूसरा है मैकेनिज्म, कि ये जो रिएक्शन ए से बी हो रहा है, क्या ये वाकई असल में ए से बी बनता है? पता चला कि नहीं, ये ए से पहले ए बी स्टार बनेगा, बना,
ए मालिक्यूल जो है वो बी पर आकर बैठेगा, फिर वो पूछेगा बी से कि भाई मैं आपसे रिएक्शन करूं, फिर वो बी स्टार बी एक का, आपने देखे होंगे लिटरेचर में कि सिर्फ मीथेन के लिए लोगों ने उसके एलिमेंट्री रिएक्शंस बनाए हैं 500 से ऊपर। अभी एक नई रिसर्च आई है जिसने 5000 मीथेन कंबसन के रिएक्शंस बनाए हैं। मैकेनिज्म वो कहते हैं कि मीथेन का रिएक्शन हमें तो पलक चबकते पता चलता है कि आग लग गई, लेकिन वो कहता है ये आग इतनी आसान नहीं लगती, एक नैनो सेकंड के भी 1000वें हिस्से में ये काम होते हैं कि मीथेन और ऑक्सीजन कैसे मिलते हैं, रिएक्शन कैसे होता है। वो एक डिटेल्ड रिएक्शंस की मैकेनिज्म दरियाफ्त करना, एलिमेंट्री रिएक्शंस को बताना और उनसे उनके हिसाब से काम चलाना। अब ये इन्होंने क्यों किया है, 5000 एलिमेंट्री स्टेप्स या एलिमेंट्री रिएक्शंस बताने का मकसद क्या है? उसका मकसद ये है कि जितना आप नेचर के क्लोज जाएंगे, जो अल्लाह ताला ने नेचर डेवलप की है, जितना आप उसको क्लोज जाएंगे आपको उतनी कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स चाहिए। अब अगर आप कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स के साथ मॉडल बनाएंगे तो डेफिनेटली वो रियलिस्टिक आंसर के बहुत करीब होगा। तो मॉडलिंग एंड सिमुलेशन का मसला ये है कि हम कितना बेहतर अपना मॉडल रियल वर्ल्ड के साथ बना सकते हैं, मैंने रियल वर्ल्ड का जवाब ऐसा आए। कभी कभी हमें कॉम्प्रोमाइज करने ही पड़ते हैं बहुत सारी जगहों पर, कभी हमारी अपनी इंफॉर्मेशन कम होती है, कभी हमें वो सॉफ्टवेयर जो है ना लिमिट कर लेता है, कभी जो है वो उसमें कोई अप्रोप्रिएट टूल नहीं होता, कभी जो है ना वो हमें टाइम इतना कंज्यूम नहीं करना होता। मिसाल तो हम सीएफडी पर काम करते हैं तो एक सिमुलेशन 1 साल भी लेती है। अब मैं कहूंगा यार 1 साल को छोड़ो, मुझे 3 महीने में पीएचडी करनी है तो मैं कुछ ना कुछ तो उसमें डंडी मारूंगा। तो ये डिपेंड करेगा बहुत सारे फैक्टर्स पर। चले, अब मुझे ये बताएं आप लोग कि मैंने लिया है, ये कोई कंपोनेंट आया था ये, मैं इसको ऑल फिगर को फुल नेम सिमुलेशन नेम देखें, CIS और ब्यूटीन, यस CIS, और ये असल में लेना था CIS ब्यूटीन और CIS TR2 ब्यूटीन। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम है, बट उसका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। ओके देन पैंग रॉबिन्सन नहीं यूज, उन्होंने NRTL लिए और कुछ इसमें भी देख लें कोई चीज चेंज की है तो, क्योंकि हमारा रिजल्ट एग्जैक्ट आना चाहिए। NRTL और NRTL में से ठीक है। ओके देन रिएक्शन डिफाइन करने के लिए काइनेटिक का रिएक्शन डिफाइन किया जा रहा है, एट काइनेटिक, और इस रिएक्शन को चलाने के लिए भी हमें जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो इसके अगले पेज पर है। ओके डबल रिएक्शन, ओके अब ये जो भी बता रहा है वो यहाँ पर नजर आ रहा है तो अब यहाँ से ही देख लेते हैं। CIS2 ब्यूटीन और TR2 ब्यूटीन, यहाँ पर जो है वो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट -1 और 1, -1 और 1। अगर आपका ये ऑर्डर का फर्क होगा तो ये बाय डिफॉल्ट उसने 1 और इसको 1 कर लिया। अगर इफ यू हैव एनी डिफरेंस देन यू कैन हैव लाइक फर्स्ट ऑर्डर में ये 1 और ये 0 आएगा, रिवर्स ऑर्डर में ये इसको इसने बाय डिफॉल्ट 1 कर लिया है तो वी पुट 0 इंस्टेड ऑफ 1। अगर ये 1 होगा तो इसका मतलब है रिवर्स ऑर्डर भी हो रहा है, रिवर्स ऑर्डर नहीं है, रिवर्सिबल रिएक्शन ये नहीं। देन मोलर CH2, ये सारे टेम्परेचर बाय डिफॉल्ट हैं पाउंड मोल पर क्यूबिक फीट। यहाँ पर पाउंड मोल पर क्यूबिक फीट, ये जो यूनिट है वो एग्जैक्ट लेने हैं रेट यूनिट्स की। पाउंड मोल पर क्यूबिक फीट पर सेकंड पर मिनट, और इसके बाद 0.23 ए जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन में 0.23,
और इसके साथ ये 0 0 है, सॉरी ये 0 और ये भी 0 है। ये ए ये क्या हमारा चीज है? आ, आर्हेनियस कोएफिशिएंट? ये ये ए जो है नीचे लिखा हुआ है, रेट कांस्टेंट जो होता है वो बराबर होता है ए ई पावर माइनस ई ओवर आर टी, ठीक है ना। दिस इज और आर्हेनियस इक्वेशन, राइट? अरीनियस, लेकिन एक मॉडिफाइड अरीनियस इक्वेशन भी आई है बाद में, उसमें इंटू टी पावर बी। अगर टेम्परेचर ज्यादा डिपेंडेंट है तो फिर बी भी कोई होता है, उसका भी ऑर्डर होता है। तो बी को भी 0 कर दिया तो ये मॉडिफाइड, तो खत्म हो गई बात, ये 1 आ गया फैक्टर। और ए हम्म। और ई एक्टिवेशन एनर्जी 0 है, तो ऊपर हम्म। पावर 0 तो ई पावर 0 मीन्स वो भी 1 हो जाएगा। इसका मतलब है रेट कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इज इक्वल टू 0.23 ऑफ ए। ऐसे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जीरो हो सकती है किसी रिएक्शन की? मैंने, इसका मतलब ये कि ये विदाउट एनी एनर्जी हो रहा है। ऐसे रिएक्शंस की जो, जिसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, वो उनकी एक्टिवेशन एनर्जी अज्यूम की जाती है कि 0 है, वो सडन हो जाते हैं। हम्म। जैसे मीथेन की स्पॉन्टेनियस नहीं है, ये एक्टिवेशन एनर्जी 0 नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि मीथेन और एयर, अगर हम चूल्हे को स्टार्ट करते हैं तो कांटेक्ट तो हो जाता है लेकिन आग नहीं लगती। आग लगाने के लिए यू नीड टू रेज द टेम्परेचर, तो वो टेम्परेचर जो रिएक्शन को स्टार्ट कराने के लिए जरूरी हो उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे, ई। अगर ई किसी की 0 लिख रहे हैं तो इसका मतलब है जैसे ही रिएक्टेंट आएंगे माहौल में, आपस में मिलेंगे तो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाएगा। जैसे हम सोडियम पड़ा हो किसी डब टब में, उसमें पानी फेंक दें तो हाँ अचानक जी, वेरी हमारा, इंस्टेंटेनियस, हाँ जी हाँ, बिल्कुल। दिस इज उसकी ई 0 है, तो समझ में उस टेम्परेचर पर। चलें जी, ये हमारा डेफिनेशन होपफुली पूरी हो गई, उसमें कोई हमने गलती नहीं की। ओके, सो बाकी तो सही है मामला। हमने इसको किया अपने फ्लूइड पैकेज के साथ, और हमारा एक ही रिएक्शन है, एक ही सेट है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सिमुलेशन। हम रिएक्टर में सी एस टी आर रख रहे हैं, रिएक्टर और सी एस टी आर। ओके, एंड इसका बेस जो है ना वो इस तरह है, लेकिन जब आप पैनल में जाएंगे तो पैनल में उसी वही प्रॉपर्टी पैनल कॉल हो रहा है जो दूसरों के लिए, तो उसका जो शेप है ये बना हुआ है। एनीवे, देन इट सेज दैट अब ऐड कलर ठीक है, पेपर और ठीक है, ये स्ट्रीम्स के नाम आप रख दें, फीड स्ट्रीम, पेपर आउट या वेपर लिख दें, और लिक्विड और लिक्विड। ओके, now in reactions you defined reaction set 1, लेकिन अभी हमने स्ट्रीम्स को नहीं डिफाइन किया। तो फीड स्ट्रीम, यहाँ पर वर्कशीट में फीड स्ट्रीम को यहीं से डिफाइन कर रहा है, 25 डिग्री सी, 25 डिग्री सी, एंड देन किलो पास्कल, 1000 किलो पास्कल, और मोलर फ्लो इज किलोग्राम। तो यहाँ पर यूनिट जो है ना वो हमने जो रखे हुए हैं वो नॉर्मल होने चाहिए, तो हमने इसको एसआई में ले लिया। वन हो गए, वन। When this stream is converged, then it says composition. Composition is 100% speed में ये है। Okay, so says अब हम डिजाइन में पैरामीटर में जाएंगे और वॉल्यूम जो है ना वो 0.005 क्यूबिक मीटर देंगे। तो इन डिजाइन पैरामीटर वॉल्यूम इज बाय डिफॉल्ट एम्प्टी, हम कहेंगे कि 5 क्यूबिक फीट, क्यूबिक मीटर, 5 ई रेज़ टू -3। ये वॉल्यूम गिवन है? ये वॉल्यूम ऊपर प्रॉब्लम स्टेटमेंट में गिवन है, और ठीक है। 100% यहाँ पर 100% है।
तो कन्वर्ज तो हो गया। एड एडजस्ट, अब हम जो है ना ये देखें, अगर आप पीछे देखेंगे तो योर योर सिचुएशन इज ओके। आपका जो प्रोडक्ट है वो बनना शुरू हो गई अकॉर्डिंग टू, बना 50% कन्वर्ज हुआ है इस कंडीशन में। और 54% जो है ना 45% प्रोडक्ट बनी है। अब देखें, जब हम किसी रिएक्टर में जाएंगे और रिएक्शन में जाएंगे तो रिजल्ट्स देखेंगे, तो यहाँ पर एक पैरामीटर आता है जो कैलकुलेट करता है कि एक्चुअल परसेंट कन्वर्जन कितनी हुई है। ये एक एक इस टूल का एक वेरिएबल है, एक्चुअल परसेंट कन्वर्ट, दैट इज 42% है। ठीक है, तो हम इसी चीज को ये कह रहा है कि एडजस्ट करवाना है हमने। तो हमने एडजस्ट क्या करवाना है, CSTR की का टैंक वेरिएबल को एडजस्ट कराने के इतना रखो कि ये जो परसेंटेज है वो 50% या 90% आ जाए। ये गिवन है, यानी कि इसका वॉल्यूम कितना हो। अगर हम इसके वॉल्यूम को बढ़ाएंगे और कम करेंगे तो इसकी जो परसेंटेज कन्वर्जन है वो कम और ज्यादा होगी। अब हमें एग्जैक्ट वॉल्यूम तो पता नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि हम चाहते ही हैं कि कन्वर्जन जो है वो 90% रहे अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो हम इन ये रियल वर्ल्ड अगर आप सॉरी, वाकई रिएक्टर इन रियल वर्ल्ड अगर आप रिएक्टर का वॉल्यूम बढ़ा दें वाकई, तो क्या इससे कन्वर्जन पे इफेक्ट पड़ता है? कन्वर्जन पर इफेक्ट पड़ेगा। अगर हमारा इसका मतलब ये है, हम CSTR ले रहे हैं, CSTR का मतलब ये है कि 5 क्यूबिक मीटर का था, तो उसमें जब वो माल गया और फिर माल निकल भी रहा है, ठीक है ना, तो उसको जितना रेजिडेंस टाइम मिल रहा है उस हिसाब से कन्वर्जन है। लेकिन जब हम उसका वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो इवेंचुअली हम रेजिडेंस टाइम बढ़ा रहे हैं, तो जितनी ज्यादा देर तक वो उसमें रहेगा तो कन्वर्जन बढ़ेगी। इट लेकिन आप डिपेंड्स ऑन, अमाउंट भी बढ़ा रहे हैं ना? हम अमाउंट सेम दे रहे हैं, पीछे अच्छा, पीडी सेम स्ट्रीम दे नहीं रहे हैं, बढ़ा है। अच्छा। पीडी स्ट्रीम को तो कुछ नहीं छेड़ा ना, हम सिर्फ वॉल्यूम को बढ़ा और हम्म। कम करके उसकी एडजस्टमेंट कर रहे हैं। अच्छा, एडजस्टमेंट, रेजिडेंस टाइम है। इसमें हम एडजस्टमेंट CSTR का वॉल्यूम करेंगे, टैंक वॉल्यूम। और किस वेरिएबल से एडजस्ट करेंगे, हम कहेंगे कि CSTR की परसेंट जो है ना वो कन्वर्जन, एक्चुअल परसेंट कन्वर्जन ये, और इसका हम फिक्स में रखेंगे 90%। ठीक है ना, तो हमने हमें 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 ये कहेगा कि ठीक है 90% आपने रखा, लेकिन मिनिमम और मैक्सिमम क्या है, हमें एक अंदाजा उसको देना पड़ेगा कि टॉल ये स्टेप साइज है 2.5 बहुत कम, और 1000 इटरेशन, ये दो चीजें हैं इसके हमने पैरामीटर्स में देनी होंगी। 2.5 रेस टू -2 -2 2.5 -2 2.5 रेस रेस टू -2 और इक्वेशन 1000 इफ देयर इज एनी नो। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे, वेट कैलकुलेट। अब इसने क्या किया है कि इसका वॉल्यूम एडजस्ट खुद ही किया होगा। हमने शुरू में कुछ वॉल्यूम तो दे दिया था, वो था 5 क्यूबिक मीटर, लेकिन इसने कहा 63 पॉइंट 2.25 क्यूबिक फीट जो होगा वो होगा 0.005 क्यूबिक फीट की बजाय 0.00 मतलब 063 बढ़ा दिया काफी। और अब इसकी परफॉर्मेंस देखें, रेटिंग देखें, रिएक्शंस में देखें रिजल्ट, अब इसकी 90% कन्वर्जन अब ये फिक्स हो गई। तो इस एडजस्ट ने क्या किया कि वॉल्यूम को एडजस्ट कर लिया हमारे दिए हुए वेरिएबल के हिसाब से। ये रिक्वायरमेंट थी। अब हमें ये देखना है कि चले इस, ये तो हमने देख लिया, लेकिन अब बताएं कि इसका वो क्या था। अब रेजिडेंस टाइम कितना लगा इसको, कितने वॉल्यूम में रेजिडेंस टाइम, तो ये कैलकुलेट करने के लिए हम स्प्रेडशीट का एक सहारा ले रहे हैं। इन दिस वी कैन से रिएक्टर, हम ये तीन वेरिएबल उठाएंगे, रिएक्टर वॉल्यूम, फ्लो रेट और रेजिडेंस टाइम। ठीक है ना, रिएक्टर वॉल्यूम भी उठाएंगे और उसको भी उठाएंगे, और फ्लो रेट भी उठाएंगे, इवन सेलेक्ट वॉल्यूम। ओके, अभी हम देख रहे थे रेजिडेंस टाइम तो किसी स्प्रेडशीट में दिया नहीं हुआ था, आई मीन किसी हाँ अभी किसी रेजिडेंस रेजिडेंस टाइम कैलकुलेट ही कर रहे हैं हम।
उसमें हमें पता नहीं चलेगा, इसलिए तो ये काम कर रहे हैं हम। ओके। टैंक वॉल्यूम और फ्लो रेट, फ्लो रेट इन हो या आउट हो, और रेजिडेंस टाइम, रेजिडेंस टाइम। इसका हमने कहा कि एड इम्पोर्ट, इसमें कहेंगे कि CSTR का टैंक वॉल्यूम एंड टैंक वॉल्यूम आ जाए, ठीक है। और फ्लो रेट आउटलेट स्ट्रीम, वेपर आउटलेट स्ट्रीम का फ्लो रेट आ जाए, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। एक मिनट, सेलेक्ट द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड प्रोडक्ट। अच्छा, यहाँ पर लिक्विड प्रोडक्ट आ रही है, वेपर यहाँ पर 0 है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर लिक्विड का एक्चुअल वॉल्यूम, एक्चुअल वॉल्यूम फ्लो, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ये आ जाएगा। और यहाँ पर हम कहेंगे कि P1 से डिवाइड करो P2। सो यहाँ पर जो वैल्यू निकली है, यहाँ पर वैल्यू निकली है पर आवर, क्योंकि हमारा जो फ्लो रेट है वो पर आवर में है। अगर हम अब हम अगर यूनिट्स जो है वो चेंज कर लें, हम यूनिट्स में जाएं और इंस्टेड ऑफ टेकिंग, एक मिनट, हाँ हम जो है ना वो अपनी यूनिट्स में जाएंगे और हम एक्चुअल वॉल्यूमेट्रिक फ्लो जो है मीटर क्यूब पर मिनट में इसको अगर करें और अब देखेंगे तो अब जो है ना वो एडिट इंपोर्ट वेरिएबल, अब हम एक्चुअल वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट हमने यूनिट सेट में मिनट किया, न्यू यूजर 3 में किया मिनट एक्चुअल वॉल्यूम फ्लो, और यहाँ पर यहाँ पर दोबारा देखते हैं, लेने की लिक्विड एक्चुअल वॉल्यूम फ्लो। ओके, टाइम, ये टाइम आ रहा है आवर में, और इसको हम मिनट में करने के लिए P3, वैसे ये कर नहीं रहा काम, लेकिन मैं इसको तो 60 से मल्टीप्लाई करूँ तो 39 ये आ जाएगा आपका मिनट। दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द रेजिडेंस टाइम। ये इस ट्यूटोरियल का एंड हो गया। 39.13 मिनट हमारा कैलकुलेट हुआ है, और 39, अच्छा यहीं इसी कैलकुलेशन में वो 60 से मल्टीप्लाई कर रहा है, हमारा कसूर नहीं था। उस मीटर का पर मीटर के ऊपर आवर ही है, हमने फार्मूले में ही मल्टीप्लाई करके 60 से इसको मिनट में कन्वर्ट करना था, मैंने बाद में अलग से किया। एनीवे, सो लेकिन आपने 30 यूनिट चेंज किया तो इधर क्यों नहीं चेंज हुआ? यूनिट चेंज किया तो, लेकिन ये लगता है कि वो ऐसा ही यूनिट ही पिक कर रहा है, ऐसा ही यूनिट ही पिक कर रहा है बाय डिफॉल्ट जो उसके हैं। अब पहले तो ये देखना पड़ेगा कि लिक्विड आउटलेट में अगर एक्चुअल वॉल्यूम देखा जाए, पैरामीटर में एक्चुअल एक्चुअल वॉल्यूम परसेंटेज फ्लो रेट, अगर वो पैरामीटर आ रहा है तो एक्चुअल वॉल्यूम फ्लो, अब ये मीटर में आ रहा है, तो ये वहां पर जो है ना वो जब वेरिएबल ले रहा है तो उसका यूनिट जो है ना वो अपनी मर्जी से उस यूनिट में नहीं ले रहा, ये
बाय डिफॉल्ट जो इसका यूनिट है इन एसआई यूनिट उसमें ले रहा है, इसलिए इस फार्मूले में ही डायरेक्ट अगर हम करना चाहें तो इस फार्मूले में ही जब आप 39 पर अब हमें इसकी जरूरत नहीं है और इसकी भी जरूरत हमें अब नहीं है, इसकी भी जरूरत है। सो दिस इज हाउ इज एक्चुअली सॉल्व। तो आई होप यू गॉट सम आइडिया कि रिएक्शंस कैसे काम कर रहे हैं और रिएक्शन से कैसे प्ले करेंगे। अगर आप ये ट्यूटोरियल्स सारे कर लेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपको ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिएक्टर्स और डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शंस में आपको ट्रेवल करवाएगा और आप अच्छे खासे रिएक्शंस को समझने में अपना दिमाग खर्च करेंगे और इवेंचुअली यू अंडरस्टैंड के व्हाट इज हैपनिंग इन द रिएक्शन वर्ल्ड। फिर बाद में हम जब डिजाइन केस स्टडीज में करेंगे तो उसमें भी, अब उसमें तो हर ऑपरेशन आएगा ना, तो ये भी रिएक्टर्स उधर भी आएंगे। आई थिंक इनफ फॉर टुडेज लेक्चर। आप इसको ट्राई करिएगा और फिर हम कल मजीद ये 2-3 आपके क्वेश्चन भी सुनेंगे और फिर ये मजीद जो है ना वो हम बात करेंगे कुछ इनकी। पिछले क्वेश्चंस भी हैं इमरान साहब। वो फिर ऐसा करते हैं ना, कल हमारे पास इतना टास्क नहीं होगा, हम इस ट्यूटोरियल्स में एक कॉम्प्लिकेटेड ट्यूटोरियल भी है प्लग फ्लो वाला, वो करके और फिर आपके क्वेश्चंस ले लेंगे। चले, अभी डिस्टिलेशन वाले क्वेश्चन से फारे होंगे तो रिएक्टेंट्स की बारी आएगी ना। चले डिस्टिलेशन वाला ही सुन लेंगे कल पहले। ठीक हो गया। ठीक है, ओके, राइट अल्लाह जी, राइट। हाफिज। ओके जी, थैंक यू, बाय बाय।